felicitate our chief guest and invited panelists with mementos. I first request Principal Sir to present a memento to our chief guest, Professor Mairaj-ud-din Sheikh. I again have the privilege to now invite the worthy Principal Sir to formally welcome the dignitaries, invited panelists and other participants. Sir. Professor Mairaj-ud-din Sheikh Saab, ex-head of the Department of Geography, SP College, Srinagar, other panelists, faculty members, and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahli junoon ka kya khata, aaya payam to chal pade. Ahli junoon ka kya khata, aaya payam to chal pade. Boy sama ko de saza, dast saba kalam kar de. Boy sama ko de saza, dast. Boy sama ko de saza, dast saba kalam kar de. Why blame the patient that engulfs me? Why blame the patient that engulfs me? It was a message I followed. It was a message I followed. Punish the fragrance of flowers. Punish the fragrance of flowers. Cut the hand of the breeze. Cut the hand of the breeze. That brings me this message. Why we are organizing? I mean, when I say I is not Ghulam Jilani. I is SP College. From gatekeeper to up to principal, everybody is within the braces. So why we are organizing this program here? During my earlier tenure here in SP College between 10 and 13, we usually use to discuss the economic scenario and other aspects of our youngsters with Professor Mairaj Saab. Although Professor Mairaj is from Geography, but at times, whenever we used to exchange our views, I found very burning desire in him that our youngsters should be at the right place. There should be enough opportunities for them. That is the reason why I have invited him here. And the panelists that we have chosen today, I think there are other successful stories outside, beyond them in Kashmir, obviously. But the point is that why we have invited them, they have made a space of their own on the entrepreneurship map of Jammu and Kashmir. So the purpose is that the success stories, the people with the success stories will come here and they will discuss and our youngsters will learn. And there is no age for entrepreneurship. There is no age for business. I firmly believe that our girl students, especially the girl students, should come forward and do some entrepreneur journeys. It can be if my girl here sells 1 dozen of kelas outside, or we are seeing selling that lady or somebody with masala. We have been using that for decades. But the point is that why our youngsters don't come forward. It can be packaged in the most hygienic manner. There will be the technological intervention so that it becomes a success story. I'm not against kurkure and other foods, but if there are other packaged foods, if there are other delicacies that can satisfy your taste buds, why our youngsters are not working on that? I think that you are young, energetic, dynamic, and you have the technological know-how. So I want that with the intervention of the technology, there should be the value addition of the things. With the intervention of the technology, you should create more jobs. With the intervention of the technology, you should be in a position to earn something of your own without the support of your parents. You should try to stand on your own legs, and that is the purpose of the today's journey. But it is not possible unless and until our students have a strong desire. We are already, after I have joined here, I have given the instruction to have the business standard and economic times in our college library. I hope that
my students will be visiting the library, even if it is 2 years old business standard, but still it is relevant so far as the business news is concerned, business model is concerned, how the things can be monetized, how the products that are available next door to you, how that can be converted into a money minting machine. So that is the purpose of this. It is just the sound travels like a wave. So we have disturbed this pond. We are disturbing the very psyche of the youngsters so that they will be forced to think that they have to do something. It is only the mindset that matters. If you see that, if you can have a look on the financial sector, stock markets, lakhs of the crores of the business is done in every day, and it is the most secular thing. I don't think when you are investing, when you are purchasing, when you are selling the shares, or you are working with the mutual funds, fund houses, there is any bias. So those who have the skill, those who have the knowledge, those who know where they have to go, they definitely earn a lot of money. And in 2008, I visited Kashmir back from US. I was working there as postdoc. So I realized that our mothers, our farmers especially, they are, suffering huge losses because of post-harvest technology, lacking the post-harvest technology techniques. Because why I realized it that year only, because when I saw the canned foods in US, we were using ready to cook and ready to eat product is generally 99% in US. So it inspired me that I should also do something for our farmer community here. So when I started doing research in post-harvest technology in food preservation, the first challenge I faced was the use of sodium benzoate. Because I was the student of cancer biology, I knew that sodium benzoate is not good for health. For that reason, I started doing research how to eliminate sodium benzoate. And it was a long journey. It took me 8 years to replace the sodium benzoate in food preservation technology. It was 2000, I started research in 2008, and I completed this research in 2016 when I was as an assistant professor in King's University. So in 2017, I was fortunate that I lost my job. I was terminated from job in King's University. And when I returned here in Kashmir, so I was ready with my food preservation technology. And the first thing was to establish the industry because it needs a lot of money. I applied to the funding agencies. My project cost was 3.12 crore rupees. But what happened? This was the first challenge, in fact, because we have challenges at every step of our life. Because this is the human nature. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah has created human beings in toil and turmoil. So we should not be dejected at any place when we suffer any difficulty. For that reason, the first challenge was my parents, they strongly opposed me to take bank loans because they are religious, my parents. For that reason, because they believe that riba is haram. So it was the first challenge. So what to do? So I sought, they helped me financially, my parents, and my friends came forward when I told them that this is the reason I don't want to apply to the or bank loans because it needs a huge amount. So my friends also helped me in that. They financially supported me, giving me some kardi hasana, the non-interest based loans. So finally, alhamdulillah, I started. It was the first product
I launched was garlic scape pickle because because I just wanted to create a model here to help the how to help the farmers. Garlic scape was basically discarded by farmers. It was of no use, only limited some few kgs by using by each every farmer for their personal use. So you can see the story of garlic scape here. In 2018, I just purchased 220 kgs. In 2022, I purchased 19,500 kgs. Initially, I covered my own village. Then I, expanded this purchase of garlic scape to two districts, Shupayan and Pulwama district. And next was, I used these types of different types of, vegetables to help farmers. When I basically started my production, I chose two villages. One was in Pulwama district, another was Shupen district, my own village. That there should be not a single kg of vegetable to be wasted. So Alhamdulillah, I'm successful in that. And this thing has now, this pilot project, it has expanded to two districts now, Pulwama and Shupen district. So you can see here, the next challenge was the marketing because I was a research student. I was a researcher. I was not having any background in business. For that reason, for first 6 months, when I started selling my products to the market, to the shopkeepers, I found that is very difficult for me because there were not returns because I was having limited working capital at that time. For that reason, I just switched my B to C business to B2B business. B2B is, when business to business. Where I just found that there are some companies in Kashmir, just like Kamal is there, Araf is there, Adhar, so many famous brands are there, which are the market networking. I just reached their headquarters and they asked, told them about my business idea that I can supply my products. For that reason, I cannot name them. Some of the companies they accepted my products. So that created a cash flow to my company. So it helped me, although there's less amount of benefit in that, profit in that B2B business. B2C is more profitable. B2B is less profitable, but you have the continuous cash flow. So Alhamdulillah, and after 2018, there was 2019 problem, 370 problem, then the COVID problem. Despite that, after COVID, 2019, 2020, I realized that, when my parents, they objected me taking the riba, taking bank loans, I was very annoyed with them. I told them that I follow some scholars who, basically they permit to take bank loans in certain circumstances. I was following that time, when I was US, I was following Javed Gandhi, the scholar at that time. But after 2019, problem and 2020 COVID problem, I realized that my parents were right, I was wrong. So because of these crises, political crisis, so many industries they lost their business because there was no sales at that time. And Alhamdulillah, my company was the only company who survived it during that time. And that was after 2 years, I realized that my parents were right and I was wrong. Then I expanded my products from lotus stem to mushroom. It was just 2021. The agricultural department they approached me that the farmers are suffering huge losses because they had a mushroom cultivation, but they don't have the market. And I should help them.
So I started developing the mushroom pickle, two products out of mushroom pickle and mushroom yakni. So, what happened initially, first year, I was not successful. I thought that's a very simple, as just like I'm using other vegetables and fruits, but it was really difficult. I suffered some losses, but those losses basically helped me to develop the perfect product out of mushroom, and it was successful. Mushroom pickle and mushroom yakni. And Alhamdulillah, this year I purchased mushroom from three districts now: Shopian, Pulwama, and Gandarbal district. You can imagine the difference. And after that, once I was working in my factory, and one person came that I need this mango pickle. I need mango pickle. I said, because I deal with the local products which are locally produced. I don't deal with the mango pickle. And all of a sudden, it struck in my mind that why not to create the apple pickle, because we have apple here. So I started developing the apple pickle, started distributing this product to my friends, colleagues, for their feedback, and all Kashmiri these customers, they rejected this product. They said that this is absolutely it makes no sense. So many people, they were hesitant even to taste this apple pickle. And those days, there were some these carpenters who are working in our home for this paneling. These people were from Punjab. I started, I just gave them this apple pickle. They started loving it. And after that, they said, we will only eat apple pickle, nothing else in your home. So it struck in my mind that this product is for non-Kashmiris, not for Kashmiris. And I launched this product in three places: Gulmarg Road, Pahalgam Road, and Nishat. All my products are being, ordered from all states of India, especially the west side of them. They like my, the product states. And afterwards, I just moved to chicken and fish, because for local customers, Apple product is not there, but I have to create some products for the local customers. It was chicken and fish based products. And I have almost 21 products, non-veg products. And during this time, because I got encouraged that I should help farmers here more and more. I should utilize my time. Allah subhanahu wa ta'ala has given me this life is very precious. So I should use all my potential to help the local community here, because there is a spirit behind that is. The best among you is the person who benefits the human beings. So this is the spirit, this is the near, this is the intention behind this. So for that reason, when because we are in industrial area, there is this cold store, CH storage of apples there. When they send these apples to the market, there is C grade apple. When there is some injury to the apple, so it is not after 3-4 months of storage. So we are not able to sell it to the market. So there is a C grade. I'm using C grade apple. So it was basically wasted. Now it is being used. And after that, there is a D grade apple. Because this creates a huge problem. It creates pollution around the industrial area. I use D grade apple for manufacturing organic fertilizers. So that is the concept. For that reason, I just launched one more company, Khorasan Biotech. We should try. We should try to give some alternatives that are the alternatives that are beneficial, that are useful, and that are not harmful to the society. And ultimately, inshallah,
the next target will be to generate the transgenic plants. Thanks a lot. Now I invite Mr. Fayaz Ahmed Dar, founder Sag Eco Village and award-winning venture being called the Hidden Gem of Kashmir, to share his success story. Sir. Assalamu alaikum. Good afternoon. Adab. So I was keen to listen to other stories, and I was lost in the story of Khorasan Foods, and I'm so overwhelmed by their success and by their work. So thank you very much for sharing all these details, sir, with us. Thank you. मैं गसी वही आलो करी कि हम बहुत ज़्यादा ये जाती है इसलिए because because I am an entrepreneur of entrepreneurship. So part of our mission is to train entrepreneurs and to learn about entrepreneurship, to experiment in what kind of entrepreneurship is possible. So उस लिहाज से I've always been a student, I am a student, and hopefully I'll remain a student. तो इसलिए मैं थोड़ा keen था उस लिहाज से, मगर इतने में बुलावा आ गया. But anyway, thank you so much for the opportunity, sir. And I'm also so grateful to all of you for being so patient and making the time to be here. I know काफी सारी सब लोगों को काफी बड़ी मसरूफियात होती हैं. तो मगर अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी आप लोग ठीक हैं? अभी आप लोग सीख रहे हैं कुछ? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती घुसाया गया है हॉल में? चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो इसके लिए अपने आप को आप मुबारकबाद दें. थैंक यू. तो जैसे मैंने बोला कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारी जर्नी हो सकता है लंबी रही है थोड़ी बाकी लोगों से, मगर उनकी सक्सेस स्टोरियां ज्यादा रैपिडली ग्रो हुई हैं क्योंकि उनका फोकस, उन्होंने काफी मेहनत की है और फोकस उनका रहा है बड़ा शार्प. और वो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं रहता है, अगर आप मल्टीपल चीजों पे की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो फिर आप आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत होती है. तो जितना शार्प आपका फोकस होगा, जितना आप एक चीज पे फोकस करेंगे, उतना बेहतर होता है. तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करने के बजाय मैं सोच रहा था कि व्हाट वुड बी यूजफुल फॉर मी टू डू इन दीज 5 minutes जो हमारे पास हैं. तो क्योंकि हम लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को या नए एंटरप्रेन्योर्स को इन how to become an entrepreneur, how to take charge of your mind, how to build your capacity to be able to take control and develop yourself and build your ability to become an entrepreneur. Because मेरे हिसाब से entrepreneurship, we are meant to become entrepreneurs. Human life is an entrepreneurial venture. हम अब anyway, मैं किसी और चीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, मगर जो हमारा जो डिजाइन है, देखिए जो कुदरत में है, जो नेचर का डिजाइन है, फॉर एग्जांपल एक सेब का पेड़ जो है दूसरे सेब के दूसरे पेड़ को या दूसरी किसी वैरायटी को यूज नहीं कर सकता है. वो अपना फलता फूलता है, अपना फल देता है, ये कुदरत का निजाम है, तो वो दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता है. ऐसे ही कुछ जानवरों में हम देखते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मगर एक लिमिटेड लेवल तक है. इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कैपेसिटी दी है, ऐसी इमेजिनेशन दी है कि वो कोलैबोरेट कर सकता है किसी के साथ भी, किसी चीज के साथ भी. इनफैक्ट खाली कोलैबोरेट नहीं, द डिजाइन इज सच. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. अभी ये टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं ना, अभी अगर हम रिसेंट ये जो प्रेजेंट साइंटिफिक दौर है, काफी सारे दौर आए हैं इंसानी जर्नी में अभी तक, और काफी सारे हमसे एडवांस भी थे और वो मिट भी गए. मगर अभी जो प्रेजेंट दौर है, जो करंट दौर है इंसानी तरक्की का, जिसको हम ये साइंटिफिक दौर कहते हैं, इसमें जितनी भी इजादात हुई हैं अभी तक, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, इमेजिन कीजिए फॉर अ सेकेंड, टायर से लेकर गाड़ी तक, ये माइक्रोफोन, हमारे फोन, हमारा इंटरनेट, हवाई जहाज, एटम बम, पता नहीं क्या क्या, सोचो कितना हुआ है. हमारे चश्मे, कैमराज, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स,
हैं, हैरान कर देने वाली चीजें नहीं है ना। इतनी सारी प्रोग्रेस हुई है, बहुत सारा कुछ हमने रीडिस्कवर किया है और री इन्वेंट किया है, मगर गेट दिस, all of the intelligence contained in all of these discoveries and in all of these inventions. Imagine कीजिए that this intelligence contained in all of these discoveries and all of these inventions is yet to amount to अभी तक पहुंची नहीं है। कहां तक? The intelligence contained in one living cell. लिविंग सेल पता है क्या होता है? सुना होगा, हम सेल्स के बने हुए छोटे छोटे जो दिखते भी नहीं है इतने साइज के, उस ना दिखने वाली सेल में जो इंटेलिजेंस है, अभी तक जितनी भी इस फेज में ह्यूमन, ये जो साइंटिफिक फेज चल रहा है, इस फेज में जो प्रोग्रेस हुई है वो एक सेल के बराबर अभी नहीं है। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अभी कितना एक्सप्लोर करना बाकी है ना। तो हमको कई बार लगता है, काफी सारे लोगों को, कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने इजाद कर दी, एटम बम इजाद कर दिया, उन्होंने रोबोटिक्स बना दिए हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमको कुछ नहीं आता है। मगर अभी बहुत खेल बाकी है, अभी ये पहली गेंद भी नहीं फेंकी गई है पूरे मैच की, तो बहुत अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो एक साइड पे तो आप इसको रखिए, जस्ट कीप दिस फैक्ट ऑन द वन साइड, कि अभी तक जितनी इजादात इस साइंटिफिक दौर में हुई हैं, उनकी इंटेलिजेंस अभी एक सेल की इंटेलिजेंस के बराबर नहीं है। कोई किसी को मालूम है ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं? कोई जोर से बोलेगा? नहीं मालूम? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं कोई यहां? हाथ खड़ा करें। आपको नहीं पता कितने सेल हैं? चलिए, साइंस भी गैस ही कर रहा है, तो आप भी गैस कीजिए, साइंस ने क्या गैस किया है? ट्रिलियंस। कितने ट्रिलियन? 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, अभी 75 का भी फिगर है, अभी 150 ट्रिलियन का भी फिगर है, अभी पता ही नहीं है कितने सेल है जी। जी, तो एक टाइम पे एक बॉडी में कितने सेल है ये भी नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं आप, आपको पता ही नहीं है सेल का बिहेवियर पूरी तरह भी। तो एक सेल की इंटेलिजेंस अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है। हमारी एक बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो सोचिए हाउ मच इंटेलिजेंस इज कंटेन्ड इन वन ह्यूमन बॉडी। आप लोगों में से कितनों ने सुना है हम अशरफुल मखलूकात हैं? सब ने सुना है तो सब हाथ खड़ा करें प्लीज। हाँ, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा। कितने मानते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात है? सुना एक बात है, मानना दूसरी बात है। कितने प्रैक्टिस करते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं? कोशिश नहीं, जो करते हैं या नहीं करते हैं दो ही है। कोशिश फिलहाल हम बाद में बात करेंगे कोशिश के बारे में। हाथ नहीं उठ रहे अभी, ऐसा क्यों है? हाँ, कुछ लोग, हाँ पता नहीं, मैं एस्टिमेट कर सकता हूं 5-7% है। ऐसा क्यों है? कोई वजह बता सकता है? जी नहीं, हम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? हमने सुना है और बहुत बार सुना है, मानते भी हैं, कुछ लोगों ने आधा ही हाथ हटाया उसमें, मगर काफी लोग मानते भी हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी, अब टाइम बहुत कम है, ज्यादा लंबा चौड़ा हो नहीं सकता, मगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ये दुनिया में जो बेसिक फोर्सेस है दैट ड्राइव आवर डिसीजन मेकिंग। देखिए, हम जो फैसला करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, उससे पहले हम फैसला करते हैं, चाहे हम करने का फैसला करें या ना करने का फैसला करें, या सोने का फैसला करें या कुछ ना करने का फैसला करें, ये फैसले हैं सारे हमारे। इवन इफ वी डोंट एक्ट, दैट्स आल्सो डिसीजन वी मेक। मुझे नहीं जाना है कहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, ये भी एक फैसला करते हैं हम। बट द डिसीजंस वी मेक, एनी डिसीजन वी मेक, इज बेस्ड ऑन द फीलिंग्स वी हैव, इज बेस्ड ऑन द इमोशंस, कि हम क्या फील कर रहे हैं। और वो फीलिंग कहां से कैसी होती है? दो फोर्सेस हैं जो नेचर के फोर्सेस हैं। वन इज लव। आप इबादत करते हैं तो आप अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, उसको अपना वापसी में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसके प्यार को, तो आप वापस में प्यार करते हैं उनको।
आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग फेयर, यू आर मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन फेयर। तो लव और फेयर, ये दो फोर्सेस हैं दैट ड्राइव ऑल द डिसीजन मेकिंग। या तो यू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ लव कि आपको करना है, आपको देना है, या यू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ फेयर कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये दुनिया तो जहन्नुम है। कंपल्शन इज फेयर। अब अभी डिस्कशन में मैं लंबा नहीं जा सकते हैं, मगर कंपल्शन इज आउट ऑफ फेयर, यू नो, कंपल्शन की अगर मैं नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, तो मुझे करना ही करना है। दैट्स यू आर एक्सपीरियंसिंग फेयर एंड यू आर मेकिंग अ डिसीजन आउट ऑफ फेयर। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है? किसी काम की लग रही है ये चीज आपको? काम की लग रही है या नहीं? आप पार्टिसिपेट करेंगे तो याद रहेगा, या तो सीखेंगे। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये टाइम भी जाया हो जाएगा। तो एक लव और फेयर, तो जो भी आप फील कर रहे हैं उसमें देखें कि व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग। देखिए, अल्लाह ताला ने हमको यहां भेजा है, कोई सजा नहीं है ये कोई सजा नहीं है यहां हमारा इस जिंदगी में आना है। ये स्ट्रगल जरूर है, एक इम्तिहान जरूर है, मगर इट्स नॉट पनिशमेंट। इट इज बिकॉज ही लव्स अस, उन्होंने हमें यहां भेजा है। अब ये फलसफा आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी लंबा है, मगर अभी उतना लंबा बात नहीं हो सकती। मगर कैसे, अभी एक इमेजिन कीजिए, अभी गाड़ी खरीदने जाते हैं लोग, गाड़ियां खरीदते हैं, है ना। हम किसी अच्छी कंपनी का नाम लीजिए या किसी एवरेज कंपनी का नाम लीजिए, गाड़ी की ठीक ठाक कंपनी कौन सी है? मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी जब गाड़ी निकालती है फैक्ट्री से बाहर, वो हाउ श्योर आर दे कि इसमें कोई खराबी ना हो? जी, 100%। They don't want their product to, have trouble. They don't want their product to be rejected. ये एक मारुति सुजुकी कंपनी है जो एक पता नहीं 50 साल 60 साल या 100 साल पहले बनी है, या जो एक इंसान ने बनाई है। तो जब तक they don't make sure they have processes in place, जब गाड़ी तैयार होगी तो एक क्वालिटी चेक होगा, फिर ये इंजीनियर चेक करेगा, फिर ये स्पीड टेस्ट होगा, फिर ये स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, फिर वो होगा, उसके बाद ही गाड़ी शोरूम में जाएगी बिकने के लिए, तभी मार्केट में आएगी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सी गाड़ी की एग्जांपल है। अब आप सोचिए, जिसने ये सारी कायनात बनाई, जिसने ये सारा तामझाम रचा, वो डिफेक्टिव पीस भेजेगा क्या? तो उसने इंसान को बनाया तो किसी परफेक्ट बनाया है, तो हम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। एवरीथिंग वी नीड वी हैव इनसाइड अस। और उसके बाद हमारी इमेजिनेशन है कि हम दूसरों के साथ हमें कैसे रहना है। जैसे अभी हमारे सर बता भी रहे थे कि वी आर मेंट टू सर्व अदर पीपल, वी आर मेंट टू वर्क विद अदर पीपल, वी आर मेंट टू टेक द एवोल्यूशन फॉरवर्ड। तो दुनिया में अभी जो निजाम चल रहा, थैंक यू, दुनिया में अभी जो निजाम चल रहा है और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मानते हैं आप? हैं? एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, मैं खत्म करूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं 20-20 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नौकरी चाहिए। तो यहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसका मतलब है कि बहुत सारा काम है जो हो नहीं रहा है ना। और यहां से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अशरफुल मखलूकात, जिनके पास काम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? कुछ डिस्कनेक्ट है। अगर हम, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फेयर, हमको खौफ और ये जो सारा निजाम है जिसकी
मतलब ये सिम्टम्स है एक बेसिक प्रॉब्लम की, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी सोशल इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, बाकी जो मसले हैं, ये सिम्टम्स हैं. एसेंशियली प्रॉब्लम इज वी हैव लॉस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर. अगर वो अंडरस्टैंडिंग है भी, अगर हमको मालूम भी है कि अशरफुल मखलूकात हैं, और अगर हम थोड़ा सा मानते भी हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर अफ्रेड. बहुत सारी, तो जो भी खबरें आपके पास आती हैं, मेक श्योर आप नजर रखें दुनिया में क्या हो रहा है, मगर इट इज डूइंग टू यू. कहीं खौफ की जद में तो नहीं जा रहे. थैंक यू. आप कहीं खौफ की जद में तो नहीं जा रहे हैं. एंड आर यू एक्सपीरियंसिंग फेयर और आर यू एक्सपीरियंसिंग लव? बिकॉज अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है एज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लव. तो हमको ये एसेंशियल चीज है. मैंने कुछ एग्जांपल्स दी आपको कि हाउ वी आर द बेस्ट क्रिएशन. अभी जो साइंस है, जो लेटेस्ट कटिंग एज साइंस है, मुझे मालूम नहीं आपको बायोलॉजी में अभी क्या, मगर जो कटिंग एज साइंस है, एपिजेनेटिक्स के फील्ड है, क्वांटम बायोलॉजी के फील्ड है, और ब्रेन से रिलेटेड फील्ड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है, गट से रिलेटेड फील्ड्स हैं. दे नाउ एग्री कि जो हमारी कल्चरल विजडम है, कि जो हमारे कल्चर में हमको बोला जा रहा है अशरफुल मखलूकात, वो अब वो लैंग्वेज तो नहीं यूज कर सकते, बट दे आर सेइंग कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर. दिस इज द लेटेस्ट कटिंग एज साइंस, जो अनफॉर्चुनेटली शायद अभी तक हमारे करिकुलम में उतना अंदर आ नहीं रहा है. तो मेरे यही थॉट्स अभी आ रहे थे मुझे, तो मैंने शेयर किया आपसे. होपफुली यू विल बी एबल टू यूज देम. और एक ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि मुझे खुद आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड सो क्या बताऊं, खुश हुआ मैं जो काम कर रहे हैं हमारे खुरान साहब से. और आबिद साहब का मुझे थोड़ा मालूम है, इनका इतना मालूम नहीं था, और बाकी लोगों से आई एम वेरी कीन टू हेयर. तो ये फोरम्स जहां भी आप रहें, जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, और खाली ये अपॉर्चुनिटी नहीं, एक छोटा सा लेसन मैं अपनी जिंदगी से आपको बताता हूं. जहां भी आप रहें, आई स्टार्टेड माय करियर बाय, जिसको कहेंगे एक स्वीपर की जॉब से. मैं एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर का असिस्टेंट था, मगर मैं वहां दवाई मिक्स करता था और साथ में वहां सफाई वफाई करता था, पानी वानी भरता था. ये मेरी पहली जॉब थी. और मैं अभी तक यहां तक इसलिए पहुंचा हूं, क्योंकि wherever I was, whatever I was doing, I felt I was meant to be here. I was paying attention to everything. I was learning everything. मैं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में I was a cleaner, मगर 2 महीने के अंदर जब डॉक्टर नहीं आती थी, मैं लोगों को दवाई मिक्स करके देता था अपने आप. तो because I was paying attention कि वो प्रॉब्लम क्या होती है और वो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, और वो कैसे उनकी बात सुनती हैं, कैसे वो प्रोसेस करती हैं, और क्या क्या सवाल पूछती हैं. तो जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं आप, चाहे बस में हैं, चाहे क्लास में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे, तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि यू आर मेंट टू बी देयर. ये अल्लाह ताला ने आपको वहां भेजा है. ये हंगदमग नहीं हुआ, एक पत्ता नहीं हिलता है उसकी मर्जी के बिना, ये मालूम है. तो जहां भी आप हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस जगह में भी हैं, जो भी आपके आसपास है, चाहे वो अनफॉर्चुनेटली अगर कई बार पेनफुल सिचुएशन भी है या कोई मुश्किल हालात भी है, मगर यू आर मेंट टू बी देयर. दैट इज मेंट टू गिव यू समथिंग, दैट इज मेंट टू टीच यू समथिंग. इट्स अ ब्लेसिंग. तो आप हर हाल में ये सोचें कि इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या है, मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं. तो इन अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा उठाएं. जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए, जब भी किसी से बात करने का मौका मिले, या आपके ऐसे प्रोग्राम्स हों. और आई एम ऑल्सो थैंकफुल बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो हमारे लिए भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, आपस में मिलना मुश्किल हो जाता है, इतने बिजी हो जाते हैं. तो हमको भी काफी इससे आपस में एक दूसरे के साथ आई थिंक रिफ्लेक्ट करने की कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you, Fayaz sir, for this vibrant interaction with our young students. I now invite a very young entrepreneur, Ms. Sana Imtiaz, founder of Sweet Temptations, a just 22-year-old baker who has done her schooling from the Presentation Convent School, to share her success story. Sana Imtiaz.
Assalamu alaikum everybody. I'm Sana Imtiaz, founder of Sweet Temptations. Sweet Temptations is a home-based bakery in Baghat, Barzula, and I started it at the age of 18. Uh, as soon as I passed my 10, in a society like Kashmir, we're given few conventional career choices, which is either to take medical as your subjects or to take non-medical as your subjects. So the humanities and commerce is not there in the list majority of the times. So it was same in my case. My parents wanted me to become a doctor, and I took medical as my subject in my 11th and 12th. As soon as I completed my 12th, I had scored 95% in my 12th exams and 99 marks in my biology out of 100. So there's this quota which is called a SAR quota. That basically gives you a free admission in any of the colleges, government colleges in Bangladesh. So I applied for the quota, and since I had 99 in my biology, I was pretty sure that I'll be selected. But as soon as the list came out, the SAG list, I waited for a year because the session in Bangladesh starts in January, February, and my result for 12th was already out by March. So this is for year 2017. Once the list was out in 2018, my name was not there. And I, along with one of my friends who's currently pursuing PhD in Cambridge University, London, name was not there either. So the people who were selected in that list, there was some forgery that had taken place that year, and they had quite less merit than mine, and they were selected, and they're still in Bangladesh right now, and we were not selected. So we tried our level best to fight against it. We wrote letters to the Foreign Affairs. We went to Delhi. We went to Bangladesh Embassy in Delhi, and we told them about the case. But they didn't do any justice, and that's when both of us decided that we won't further go for MBBS and we'll join a college in Delhi. So I went to Miranda House in Delhi University, and my friend was in St. Stephen's in Delhi University. But by the time I went to Miranda House, I'd already started baking. So, in the meantime, when I was waiting for the SAG list to come out, I did a course in hotel management that was a 10-day course of baking. I was quite interested in baking, but because of the studies and everything, I never thought of making it a career option. And also because my parents were government employees, and we never had this concept in family that एक बेटी अपना business खोल सकती है and baking में कुछ कर सकती है. And even now this doesn't exist, but अब 7 साल हो गए इस business में, तो I'm sure बहुत कुछ बदल गया है in these years. So then I went to Miranda House, and my friend was in Stephens. Miranda House mein, I was there for about 6 months, but by the time I was there, I'd already started my own page, and I wanted to come back to Kashmir. So I couldn't adjust with the course there. So this was second year after my 12th. So I wanted to drop out this year as well. So it was difficult for my parents to take that much in from me. कि मतलब 12th के बाद already 2 साल drop कर दिए. But I tried to convince them. For 6 months I stayed there, and I tried my best to convince them that I want to come back to Kashmir and I want to start my own venture. Finally, as soon as they thought कि नहीं अब इससे नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं रह सकती है ये, they agreed, and I came back to Kashmir. I told them that I want to go for a diploma in bakery, and I did a diploma in bakery from CCDS Delhi. After that, I joined IHM Srinagar as for my graduation, BSc in Hospitality and Hotel Administration. When I joined IHM, I was also handling my business side by side. So it was both college as well as my business, both going side by side. After that, COVID came. It came as a blessing in disguise for me because people started preferring home-based bakeries more than the usual ones which have this physical stores. So that's when I was able, my business picked up because I didn't have to concentrate much on my college work because colleges were shut. So I actually concentrated and I gave all of my time to my business. And yeah, so this has been 7 years since then. And now, earlier I used to work alone. Now I have a cloud kitchen outside my home premises.
and I have 4 more employees and at least a tie-up with 3 more delivery companies. And so this is how it all started, and now Alhamdulillah, I'm also, I was in IHM as a student, but I was also teaching because there is this subject bakery in IHM. So I'm also an external examiner there for the diploma students of bakery, and I'm also conducting baking lessons there. So, doing a graduation from college and then teaching in the same college, it's a different proud moment for me. So that's all about my journey. That's how it started, and that's how I reached here today. Thank you, everybody. Thank you, Sana Imtiaz. We now have the Shark Tank fame entrepreneur, Mr. Sheikh Samiullah, the founder of Fast Beetle Courier and Logistics Services, who have risen from local shipments to international shipments with their dedication and commitment. I request Mr. Sheikh Samiullah to share their success story. Assalamu alaikum everyone. So I will start with the words of Allama Iqbal. जब भी मैं जाता हूँ यंग स्टूडेंट्स को देखता हूँ, यंग जनरेशन को देखता हूँ, तो एक आवाज आती है कि हम ये अगर हमने कुछ हासिल किया ये भी कुछ हासिल करेंगे. अगर मैं शार्क टैंक पे पहुंचा कल को आप भी शार्क टैंक पे हो जाएंगे. सो मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर. So first of all, I would like to thank the SP College principal and the professors and the participants who joined us. So my name is Sheikh Samiullah. I am the co-founder and CEO of Fast Beetle. तो आपने फास्ट बीटल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, पता भी होगी आफ्टर शार्क टैंक या उससे पहले भी हम क्या करते हैं, कैसा काम किया था. तो मैं आपको ज्यादा बताऊंगी कैसे जर्नी हमने स्टार्ट की, कैसे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया. आप भी कर सकते हैं, ये कि नहीं है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी है आप में कम है. सो आई एम ए बीबीए ग्रेजुएट, मुझे लगता है यहाँ पे मास्टर्स भी होंगे, पीएचडी भी के लिए कुछ अप्लाई करने वाले होंगे. बट जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की फास्ट बीटल में, मैंने और मेरे फ्रेंड ने आबिद ने, हमने ये देख के स्टार्ट किया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, अगर हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करें. आबिद दुबई में जॉब करता था, मैं भी एक कंपनी में दिल्ली में जॉब कर रहा था. सो आई रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी, आबिद रिजाइन्ड फ्रॉम द दुबई. ही वाज अ सीटीओ फॉर द वन फिनटेक कंपनी एंड he has handling most 40 people around students. I mean 40 people who is handling their day-to-day operations and who are managing the product for the big fintech company. But what happened when we saw there is a gap in the market, so we start, I mean, reaching out to the young people like you, the university students, the business owners, कि क्या problem आप face कर रहे, like Sanna. So they said कि I am starting something, but I am not able to deliver to my customer. I said, why? I said, there are a couple of, I mean, big courier companies like the DTDC, and there are others. They said they are not able to cater us. I'm like, you, they have to do this. They are in the logistics field. He said they are not able to entertain us because we are very small. We are very young. We are not able to give them a 50 orders or 30 orders in a day. We are giving them 2 orders or 4 orders, and they are not able to handle it. They are thinking we are very small. We don't want to work with you. Then I thought there is a problem. Then I spoke to few artisans के बच्चों के साथ या farmers के बच्चों के साथ. And they said my dad is selling shawl. Now my mom is making a crochet. Or my mom is making a paper machine. I am creating an Instagram. I am getting orders from Srinagar as well, from out of the state, from national as well. But I am not able to deliver it. If I got an order through locally, like from the Lal Chowk, like from the Dargah, or like from the Lal Bazar, but my mom is not allowed me to do or to deliver a order to the customer. Because we live in a society where girls cannot do a delivery job. So girls can do something in the office or in the home. She should not be allowed to go out to leave home frequently, or she should go once, or she should leave before 6. And we have a culture here, and we should respect it. But I thought कि अगर हमारे पास इतना natural resources है, like we have a farmers, like we have a artisans in hundreds of
artisans we have, like the farmers we have, like we have natural resource like like we have walnuts, almonds, paper mache, shawls, pashmina shawls, carpet. We have immense natural resources, but we are not able to deliver it. We are not able to enable it properly. अगर हमारी इकोनॉमी देखें, हमारी इकोनॉमी डिपेंड है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर पे. बट ये देखा हमने कि अगर हम इसमें घुसे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो कैसे हम अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे आबिद ने टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया, मेरा ऑपरेशन का बैकग्राउंड था, मैं ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करूंगा. सो हमने 2019 में ये कंपनी स्टार्ट की. आबिद और मैं, हम जॉब, अपनी लग्जरी जॉब छोड़कर बाइक्स पे निकले, तो लगे डिलीवर अपना सामान, लगे डिलीवर करने सामान कुछ कस्टमर्स का. एक अभी भी मुझे याद है, बिमना में एक होममेड प्रोडक्ट्स बनाती थी, सो ब्यूटी प्रोडक्ट्स. जब हमने उसके साथ बात की, जैसे हम मटर वटर लाते या कुछ भी लाते, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में उसने क्रीम्स दी, बोला कि ये डिलीवर करो. एंड उसके ऑर्डर्स पहले 2, 5, 10 उसके बढ़ने लगे. तो हमने कैसे मार्केटिंग की, हमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट एक खोला. हमने बोला कि फास्टबीट इज अ लोकल कंपनी विच विल केटर लोकल, like Srinagar to Srinagar city, like Srinagar to Anantnag. It's a local courier company which pick up from the homes and to deliver within a city, not outside or not international as well. Once we start this, then we saw कि potential बहुत है. अगर हमने एक वुमेन एंटरप्रेन्योर से काम किया स्टार्ट, आज हमारे पास 1500 से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही है. तो अगर आप इधर, मैंने ये काम स्टार्ट किया, हमने बाइक्स पे 2 एम्प्लॉयज है, 1 एम्प्लॉय हमने लिया विद टाइम. आज की डेट में हमारे पास 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं. सो टॉक अबाउट द फंड रेजिंग, हम कैसे पहुंचे, हाउ वी रीच इन अ फास्ट स्पीड एट दिस लेवल, बिकॉज वी प्रेफर टू डू ए इनोवेशन, वी डोंट फॉलो ए ट्रेडिशनल. अगर हम भी बिजनेस करते, my dad is a government officer in a government department. When I left the job, my mom cried. She said, बस क्या किया, तावन सुन से पानी जिंदगी, चलो job and you start. And today she is happy. She saw me on TV. She saw Forbes magazine. She is saying कि अब मैं आजकल यूनिवर्सिटी नेशनल, अब मैं इंटर यूएस भी जा रहा हूँ वहां पे लेक्चर देने के लिए अक्टूबर में. तो शी इज नॉट फीलिंग हैप्पी कि अभी कभी भी मेरे ऑफिस आते, ओह इतने एम्प्लॉयज है, नजर ही नहीं लगी, ये फोटो ज्यादा दिखा लग. So things are changing. Mentality is changing. We have to be the change. अगर मैं नहीं स्टार्ट करता, सन्ना नहीं स्टार्ट करती, तो कौन स्टार्ट करता. सो अगर हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट देखें, हमारे जॉब्स की क्या है, सो वी हैव 47% अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज द हाईएस्ट इन द इंडिया. सो अभी हमारे पास इतनी नेचुरल रिसोर्स है, वी कैन डू बिगर थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बिजनेस भी स्टार्ट करें, हमारे पास हर्डल क्या आता है, वी डोंट हैव फंड्स, है कि नहीं. पहला ये चीज आता है कि हम फंड्स कहां से लाए. मुझे लगता है फंड्स के बारे में आप कम फोकस कीजिए, आप देखिए कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं. If you solve a genuine problem, there are 10 people who will invest the money, who will help you to, big and to scale your business. When we start the business, we start with the 5 lakh rupees. मुझे अभी भी याद है 5 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया. आज की डेट में हमने 8 करोड़ से ज्यादा फंड रेज किया कश्मीर में ही. सो ये नहीं है कि हम कश्मीर की पहली कंपनी है, बट हम लास्ट भी नहीं हो सकती है. अगर मैंने टाइम पे देखा था कि एक कंपनी, स्टार्टअप कल्चर हमें चाहिए, कितने जॉब्स मिलेंगे, एआई आ रहा है. अभी तक हम इंटरनेट पे डेटा डंप कर रहे थे कि हम इसको जो बोल रहे थे वो ये कर रहा था. आज इंटरनेट वहीं से बोल रहा है. चैट जीपीटी आया. इफ यू हैव टू रिप्लाई अ ईमेल, टिकट कैंसिलेशन, सिक लीव, जस्ट टेल द चैट जीपीटी टू राइट अ ईमेल. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से करता है. हमारे ऑफिस में कंटेंट राइटर था, जब चैट जीपीटी आया हमने उसको रिप्लेस कर दिया फिर चैट जीपीटी. सो आगे जाके मैंने नहीं किया, इज अ लाइव एग्जांपल. अगर हम बोलेंगे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, वी विल बी द फर्स्ट फेलियर. वी हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एज सून एज पॉसिबल. इनोवेशंस आ ही जाएंगे. बुरा बात कि अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें, आजकल हमें जेके बैंक के पास अपने जूते घसीटने नहीं है कि फाइनेंस के लिए या मॉर्टगेज के लिए. देयर आर प्राइवेट इक्विटी फंड्स लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट लाइक इन बैंगलोर, मुंबई. We have Velocity, we have Get Vantage. There are couple of funds की जो इन्वेस्ट करते हैं आजकल के जमाने में. अभी जब हमारा शार्क टैंक पे आया तो तब लोगों ने बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने क्यों बाहर से लाया पैसा, 1 करोड़ आपने क्यों लाया. बट ये था कि यहाँ पे कल्चर नहीं था. बट ये चीजें हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी हो, हमारे कॉलेज में भी हो, इंक्यूबेशन फैसिलिटी हो. हम ग्रांट्स दे दें अपने बच्चों को, चाहे 10 बच्चों को हम 10-10 लाख का ग्रांट दे, वो 1 करोड़ हुआ. 1 करोड़ में अगर एक बच्चा रिटर्न करके देगा, 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ लेके आएगा. जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था एज ए सीड इन्वेस्टर, 3 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले, आज उन्होंने 20 लाख रुपए का रिटर्न लिया, वो भी 2 साल में.
So time are changing. People are not focused on the real estate only. So people are investing in the entrepreneurs. So ये चीज है कि आप बोलेंगे हमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, अभी आपके पास स्टोरीज है, अभी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और अभी स्टार्टअप का बूम हो रहा है. अगर हम 2016 या 2018 से स्टार्टअप का बूम देख रहे हैं, हमने उबर देखा, हमने जेप्टो देखा, हमने इतने इतने स्टार्टअप्स देखे, और स्टार्टअप ही एक ऐसा मॉडियम है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट ह्यूज दे सकती है, जो कंट्रीब्यूट करे अपनी कम्युनिटी को. मुझे नहीं लगता है कि जब तक जितना हम आगे जाएंगे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगा. क्यों? कि गवर्नमेंट आजकल के जमाने में क्या होता है कि स्टार्टअप क्यों सक्सेसफुल हुए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? व्हाई? बिकॉज दे टेक डिसीजंस विद इन सेकेंड्स. दे डोंट वेट कि ये फाइल कब वहां से यहां जाए या वहां से कब आए वापस फाइल. मुझे बॉस क्या बोलेगा? मेरे ऑफिस में मेरा मैनेजर मेरे बदले भी डिसीजन लेता है. क्यों? इट इज गुड फॉर द कंपनी. इफ यू वेट फॉर मी, जब तक सर नहीं आएंगे एसपी कॉलेज से वापस, तब तक मैं उनका वेट करूंगा. वी हैव टू ग्रो विद द टाइम. मेरी सजेशन हमेशा यही रहती है, यंग, अगर आप ऐसे सेमिनारों में जाते हैं, कुछ टेक अवे लीजिए, अपने आप को बोलिए 10 बजे या 9 बजे आया, मैंने अटेंड किया ये सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड किया, 12 बजे भी निकली, तो मैंने क्या लिया यहाँ से? So time is more important. If you go to Dubai or any other country, they will charge you by time. They will not charge you by like 9 to 5, or they will not charge you with skills. They will charge you by time. 1 hour का कितना लेते हैं? So please, आपके पास अभी एजुकेशन है, अभी आप है इंस्टीट्यूट में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में, अभी आपके टीचर्स, प्रोफेसर आप पे बहुत मेहनत करते हैं कि आप कुछ पढ़ लिख कर कुछ बने आगे, इस कॉलेज का नाम रोशन करें. मैं चाहता हूं कि अपना ये जो भी कीमती टाइम है, ये आप पढ़ाई में फोकस करें और इंटर्नशिप में गए. अगर हमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है कि ना आप ये ना 6,000 पे नहीं जाऊं. अभी फयाज साहब ने वेल सेड कि मैंने 3,000 से या 4,000 से इन्होंने भी कैरियर स्टार्ट किया होगा. ही स्टार्टेड विद स्वीपर जॉब. इट्स अ इंस्पिरेशन फॉर अस. अगर हम देखेंगे आजकल की पेटीएम यूज करता है, ओयो यूज करते हैं, हम कहां से वो आए? अगर हम पेटीएम की बात करें, विजय शेखर शर्मा की, वो बंक बेड्स पे रहता था दिल्ली में, जहां कश्मीरी गेट है. सो हमें देखना है कि कहां से वो कहां पहुंचे. सो अगर हम में इंस्पिरेशन नहीं होगी, स्टीव जॉब्स देखिए, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कैसी बिलियन डॉलर्स बनाए. अभी यहाँ पे भी हमारे पास भी मौका है. वी शुड डू समथिंग एंड कंट्रीब्यूट. जो हमने सीखा, जैसे हमारे टीचर्स जिन्होंने मेहनत की, ये हमें सिखा रहे हैं, तो तब हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वी शुड कंट्रीब्यूट द community. If you will not do, then who else we will expect कि someone will come from the outside. So ये जमाना वैसा है कि nobody will come to rescue you. You have to rescue by yourself. Thank you so much. Thank you, Mr. Sheikh Samiullah, for sharing your inspirational journey to this fame. I now invite Ms. Shehzada Akhtar, founder Chandni Desi Milk, to share her success story. Ms. Shehzada is a young Kashmiri woman who defeated all odds to become a successful dairy entrepreneur and is now famously known as the Dairy Queen of Kashmir. Shehzada Akhtar. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mion naam Shish Shahzada, bih chhes rozan Pulwam, bih chhes zyada kashri pahan vanan, kez bih kya chhes kashir karan zyada use. Bih chhes zaban taki boy पढ़ा लिखा ताकि यमन ते तारे समझ कि अख अनपढ़ बेन यमिस न मौकस पे कह सहारा पढ़नुक स्कूल गसनुक कॉलेज गसनुक तम ते होक मौकस पे कह करिथन तम बावजूद बह ज्यादा कौशर करान 2015 मज मे पे लाइफ मज कि बस 8th पढ़ान ये विजन मे स्कूल त्रुव स्कूल क्या त्रुव मे मतलब घर सिचुएशन आई गुरबत आई गुरबतन होक मे स्कूल होक मे मतलब गवर्नमेंट स्कूलस होक मे गथिन कहें क्या होक मे गथिन क्या मौकस पे वर्दी आसान कलम आसान कागज आसान तम मूजूब होक मे स्कूल गथित कहें ये मज मे फादरस मतलब तम विजन कुन कारबारस मज 15 लाख रुपये नुकसान ताकि हेकान अंदर नबर नीर कहें
तम विजन मतलब सरकार यस तह कह स्कीम दिवान प्रोग्राम दिवान कह दिवान तुम पढ़ा लिखा मेन खुद अत गस गौर दिन अगर यह स्कीम आय अगर यह प्रोग्राम यह जेन्युन कि ना जेन्युन गौर गस कर कि वुचा पन्ने लाइफ मज स्कीम आय यह प्रोग्राम आय यह सही कि ना सही तम विजन आय अस निशन स्कीम ये ना NRLM रूरल लाइवलीहुड मिशन इस मतलब पन मदद पानस यथ मज ज्यादा पहन जन जुड़ान तम विजन आव नबरिमन अस निशन तिमो कोर अस निशन मतलब वारिया उर्दू वर्दू हु यह मगर अस तोर न फिक्र कहें मगर अस जुड़े तथ लाइफ मज मे कित कन पन कारबार स्टार्ट कोर्मुत मे कोर्मुत लछो सह मे कोर्मुत 50,000 सह मे कोर्मुत करोड़ों सह बल्कि मे कोर्मुत 50 रपियों सह कित कन मे कोर्मुत 50 रपियों सह अस क्या कोर 10 जन गए जमा 10 बेनो कर 50 रपी सेविंग पन सेविंग कर 10 बेनो 50 रपी 3 रेतन यह सेविंग कर समान रपियस 3,000 अत मज गवर्नमेंट मदद करान यह रिवाल्विंग फंड त्रावान 15,000 रपी कूत 15 मगर 15,000 सत गि लेवल स्टार्ट कहें बेटर गो ये इंसान दप ना बह पक पन्न कठन पे अगर अमिस बुथ पहाड़ यह सह पहाड़ डालान पे क्या पन मोट अमिस बराबर अतस मज यह सह पहाड़ हेकान डालित अम विजन वो मे फादरस कि मे दोस ऐ कह मतलब तमिस वनकस तुम पता औलाद साले कह अख नेरान बह वन मतलब खास वनकस जमान उल्ट तम विजन मे 4 ब्रदर कम 4 ब्रदर 4 ब्रदरों बूज मतलब फादरस गई सिचुएशन 3 ब्रदरन खानदर कोर्मुत तम वथ बीठ पानस तम वथ बीठ पानस मतलब अम विज क्या अम विज नकसान विज कहन सह पन मतलब बाज तमिस तेल बसान नकसान आव सह दपान बह त्रा वो खानदार अति या यह त्रा अति मतलब ती सिचुएशन आज घरन मज गसान मगर अस क्या कोर पत मे मतलब गाव मे कोर इथे कन कोर यमो जनो मे पे भरोस दोपुक अस तमे रपियस 30,000 यम तुल 2015 मज 50,000 15,000 गाव आज लछस त 2 लछन तम विजन अन मे 50,000 गाव अनित क्या कोर मे अस गरस मज मतलब यह कि मौक कत थवन यह गाव ती जाय कहें पे मे हमसायन हेतम त्रुपाल तम गंड मे अंद पे थो मे तथ टीनस 2 पट यह गाव रच मे यह गाव रचान रचान वनकस मेनिस आंगनस मज 22 गाव बेटर गसान वनकसन मे कई तम विजन तम 50 रपी जमा कर खतर खलकन मजूर गसन सूट त वालन दान त लोन थल करने त गसन पकनो मे पन गर बी कर मे 50 रपी जमा मगर अजकिस दौरस मज सान बेन सोन बोय कॉलेज नेरान 500 रटान 400 रटान 100 रटान वथान दपान बह पढ़ सबक मगर सबक पढ़ने बजाय मतलब कह त बह वन तुम नीजो न मतलब पानस कुन फीलिंग कह त बच्चे युस पत मतलब अंदर नेरान नेबर करान तम गलत कार बस मतलब बह क्या यथन शायन वथान बिहान यथन शायन यह कत करान बस दपान गसन यह जान तुम करो तुम वो मे कुन मे कर 50 रपियन कदर ताकि तुम यह मोल मोज थवान सोरे मैसर तुम करो अहनिस इज्जतस वन राश बिल्कुल जिंदगी मज उतरा चढ़ाव वन तान मतलब 7-8 वरियन मज मे ते गो अत कारबारस मज उतरा चढ़ाव अड़ो वोन गर नेरनस पे खबर कूता अड़ो वोन मतलब गसान यमिस दिमागी फ्यूचर गलत आसि सह गलत तहकान वन मगर ये पन मन साफ आस कर ब्या कहन क्या वनुक तान यह कारबार मे वन 2-3 लछन त्रा मे ओतर गर वन मशीनरी यथ मज वनकसन पन सामान मतलब बनावान गोड़ अत बनावान तुम वुचान बनावान अत वनकस मशीनरी सत बनावान वनकस वन मतलब सोन यह दुध वारन मज लचन लचन वार श्रीनगर तान शुपियन तान बडगोम तान या यह चामन यह मतलब हर कुन डिस्ट्रिक्स गसान मे पन यह जन कि अगर मे सतन वनकस 107 लड़ी काम करान यम मेनिस जहनस
कश्मीरस मज कि गुरबतस मज मे सत पच गुरबत मज नबर द्राय बस पन यह जन करान कि अस नबर पे अमूल तरन वनकस कुल कशीर मतलब डिस्ट्रीब्यूट गसान बस यहान कि मे पन यह चांदनी देसी मिल्क इंशाल्लाह कश्मीरस मज नबर त गह यूज तुम पान पढ़ा लिखा तुम वनान कि इलम गाश मगर यह नौकरी ये खतर यह तुम वनो अस नौकरी बेहमो कुर्सी पे इलम गाश यह हर कुन रंग चाहे कह कारोबार कर चाहे कह बिजनेस कर चाहे कह सस कम कर चाहे कह आर कम कर तुम वनो मे अगर कह सस कम कर आर कम कर तमिस फीत लगान तमिस मतलब वुचन कस फुट क्या तमिस तत इलम लगान बकार शाकिंग कहें हर कुन जाय अगर बस डेयरी फार्म चलावान अगर न मे 8th पास तह कुन बह मा हेका पेन अथस क्या तुल मगर पेन हेक मे यह हिसाब हेक मे लिखित दुध किलो कस दुत मे कतिस रेटस दुतमस क्या तोत हेक मे कह कर तवे वनान इलम गाश यह योत कह यह पोर इलम गाश अत कदर कर वह हर कुन मज यूज कर यह नौकरी पे यूज कर कहें मतलब वनकस मे बॉय तम सात बिहन द्र तम वनकस हर कन मतलब अस काम करान वथान बेहन अब तम वनकस मे बिहन मगर तिमन त रोज पन्ने जाए नसीहत अस द्राई बेन मर्द बनित अम कर कह कम मालिस माजिन खतर अम कर कह कम मालिस माजिन खतर मुमकिन मतलब असे रूद इज्जत अस पकहा ब्रोह वनकस मतलब हेर बन कह त मशूर यह तुम पानस पता अगर कह गर मशूर दपान जन मशूर मानान कहें त मगर ये जन पान अकल वाजन पान नेर जन हूं मशूर मौकस पे कुन बकार लगान यह तुम पानस पता बस मतलब ये अपील करान कि यम त मेन बाय बेन यम पढ़न लेखन असल पे मगर माज सदिस पोसस करन कदर माज हंदिस पोसस करन कदर ब्रोह पकान वुछन पन्निस दुनिया मज अस क्या करन उगबा त सरिव सत नमाज त पढ़िव सोरे करिव मगर सत वुचु तुम अस क्या पन्निस दुनिया मज करन अस यह बैग योत तुलन क्या वर्दी योत लागन क्या अस अत वर्दी तो बैगस कदर करन अस यह तुल अस कित करो कदर बाकी तुम मेन स्टोरी मत नजर मे वो मे कर 50 रुपयन पे कार स्टार्ट वनकस मेनिस गरस मज 2 लाख रतस आमदनी शुक्र बाकी तह त अगर मतलब कह तह मज यहान तुलह यह कार अथस क्या करहा तुम करो मे सतन कंटेक्ट पत वो मे कि पकन मतलब इत मोज लकुट दद शुर थप कर पकनान तिथ बह कारबार हेचनान क्या हेचनान मे पन वुचमुत मतलब ये सात मे कारबार अथस क्या तुल तम सात पोक मे सतन ब्रोह ब्रोह क्या पोक दोक यह गरीब कूड़ यह हे कर कहें तम मूजूब बह सारे वनान ये बस हर कह सत पकन खतर तैयार मान दस गस मतलब यह लगुन कहें बाकी शुक्रिया Thank you so much. Shukriya Shahzada ji, Shukriya. Pratap Shukriya, Yorgan Khadra. I'm really short of words to comment upon her inspirational journey. You are really a proud daughter of this soil. We are really proud of you. Thank you so much. Dr. Ghulam Jilani Quraishi Sahab, the principal of the college, the inspiration for this program, and Professor Manzoor Sahab, the patron, my soulmate, and Professor Shabana ji, Ashik Sahab, another Ashik Sahab, and Yasin Maqbool Sahab, and all the other entrepreneurs and HOD commerce of Government Degree College, Bibina. I am thankful for the leadership of this college, the governing body of this college, which is government college, as you know, to provide me an opportunity to be present in this very fabulous, very remarkable event.
Why fabulous and remarkable? Because all my life I have been teaching the theory. And what I learn presently is the practice, the practicals. And that practical is very, very important for the future generations. The generation of my daughters, my sons, these youngsters, and all of us. You know, when you age, you become averse to risk. You don't want to take risk. I have money, but I don't want to give it to somebody or invest it in an this business where I think that it may not come up as I had desired it to be. For example, when I see the entrepreneurship and I have my own definition of entrepreneurship, what is it? What is that? Who is an entrepreneur? A person, male or female, no gender bias, who has an idea about doing business. And incidentally, there are now social entrepreneurs, there are now medical entrepreneurs. But we will confine ourselves to the economic aspect of the entrepreneurship. So, what is first thing that an entrepreneur possesses? That is the idea. He has an idea which is an innovative idea. Everybody from our childhood, from the times immemorial, we have been consuming the food, particularly the pickles. We have been consuming this milk. We have been consuming some other things. We have been living in the houses. But there arose an idea. What idea? That we can do it differently and we can create wealth and we can serve the humanity by giving them the jobs. So first is that you should have an idea, and that idea should be an innovative idea. And the third and most important thing to which our worthy principal Sahab has driven your this attention to is that you should be ready to take risk. You should be ready to face the risk. Your investment may or may not come up. It may give you more funds, it may give you more returns, or it may not give. So unless you have these three things, you cannot become an entrepreneur. Now, once you have become an entrepreneur, once you have an idea, once you have an innovation, once you are able to take risk, then the sky is the limit. As I was impressed, it was a fabulous presentations, it was brilliant presentations, emotional presentations from the persons who have actually done this. It's not me that I am sitting at the fence, at the corner, watching others do it. It's them who have taken the risk. And you have to note their certain sentences which they used. There is Dr. Javed Ahmad Dar Sahab, and what he said, that he was fortunate to lose a job in Kingdom of Saudi Arabia. He was fortunate. Can you imagine? You are getting a job somewhere in a big country in the sense that it's a big paying country, and then you say that I was fortunate. How can he be fortunate? Because what he has done after that has proven it that what he has left was not worth, what he is doing is worth. And then we have my daughter, a lady, Shahzada Akhtar. Am I correct? Shahzada Akhtar, and what she said? She had only 25 rupees. Her brothers had deserted her family. And then she started to think, to have an idea, get it innovated, and then sell that idea, take the appropriate risk, and she is now a success story. 2,50,000 per month income. Can you imagine? So this is what is in front of you. But there's a word of caution. Caution is a high rate of failures. But those failures are not that failures that you will lose everything. Failures are that you may not achieve the target of, say, for example, you set a target of 10 lakh rupees, you may not achieve 10 lakh. You may achieve only 1 lakh. That will be enough.
you'll be employing 3 or 4 persons if you go for the entrepreneurship. That never goes to this point that you will abandon the academics. Some of you may choose the academics because in this world runs in hierarchies. There are small persons, small jobs people doing, and there are big and medium jobs and big jobs people. Thank you very much, sir, for summing up the proceedings of this program in a lucid manner. Finally, we come to the last part of this program. I request Dr. Samina Bashir from Department of Biochemistry to deliver the formal vote of thanks. Dr. Samina Bashir. Assalamu alaikum and a good afternoon. Respected Principal, SP College, Professor Dr. Ghulam Jilani Qureshi, Chief Guest Professor Mairaj-ud-din Sheikh, Professor Manzoor Ahmed Bani, Head Department of Botany, revered panelists, Sheikh Samina, past leader, Mr. Javed Ahmed Dar, founder, Khorasan High-Tech Food Processing Industry, Mr. Fayaz Ahmed Dar, founder, Sat Eco Village Nonverbal, Ms. Sana Imtiaz, founder, Sweet Temptations, Ms. Shehzada Akhtar, founder, Chandni Desi Mill, and Mr. Asif Ahmed Shah, HOD Commerce, Government Degree College, Bengal. I, Dr. Samina, Assistant Professor, Clinical Biochemistry. It gives me an immense pleasure to present a formal vote of thanks on this august occasion. I would like to place on record our gratitude to the principal of the college, Professor Dr. Ghulam Jilani Qureshi, without whom this event would not have been a success, not even possible. Sir, you have been a tremendous support system. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to Professor Mairaj-ud-din Sheikh for taking time and efforts and always being around when needed. So you have left an indelible mark on the academic landscape of this college. Thank you, sir. Our sincere gratitude to Professor Manzoor Ahmed Bani, sir, for his always full of wisdom words. Thank you, sir, for being a part of this event. This event would not have been successful without the participation of our panelists who have shared with us their invigorating stories. Thank you all. Thank you, Dr. Shabana Aslam, convener SEED, SP College, for moderating this event. Any event is incomplete without the enthusiastic participation of the students. Thank you, dear students. My gratitude to the non-teaching staff, especially Mr. Ayaz, for lending the technical support. Thank you all. Thank you. Thank you, everyone. I now invite our dignitaries, faculty members, and students to visit a stall set up by Khorasan High-Tech Food Processing Industry outside the auditorium, and also request the invited guests and the accompanying guests with them to join us for high tea in principal's office. Thank you, everyone.